The simplest way to look at it is any complex naming should start with cation first. We always, even in writing also, we'll first cation and then only we write the anion. So cation is the first priority followed by anion. Okay. Yes, sir. And once you enter the coordination sphere, now always write the ligand name first. And ligands, while you're writing, just make sure we are putting in an alphabetical order, similar to that of organic, nomenclature. Okay. Yes, sir. If metal is a part of cation or a anion, cation or a neutral species. If that bracket part is either a cationic part or a neutral part, then we must only use the common name of the metal. Okay. Sir, but in the bracket we write the anion, no? Over the bracket, if the bracket plus is coming, which means it is a cationic complex. Okay. If bracket 0 charge is coming, it is a neutral complex, like that. So we have to use the common name then. Yeah, we need to know the common names are what we use generally. I've written it the list, don't worry. So if it is an anion, if it is an anionic part, that is negative complex part, then we have to use the Latin name ending with 8. We have to use this word 8 also. For example, here. Okay. For example, if you have SN, the common name is tin, but the Latin name is stannate. It is stannous. Stannous. Okay. Yeah. So that will become stannate because you are ending that with 8. Okay. PB is lead. The common Latin name is plumbus, and that will become plumbate. AG is silver, that will become argentate. AU is gold, that will become aurate. Nickel become nickelate. Aluminium become aluminate. Cobalt become cobaltate. Chromium become chromate. So I hope you got the rhythm, right? Iron. Same names. Yeah. Only few of them have this difference in the common name and the Latin name. Iron has a difference. Iron is iron in common, but ferrate when it comes to Latin. Okay, sir. Yeah. Like that, you have to look at it. Now see the naming here, beta. For example, if this complex is given and I need to write the name. Okay? So what will I do? First, I will try to split this complex and see how it is. There are 4 chlorines here. So outside I'll write 4 chlorines. And this entire complex will get 4 plus, no? Yes, sir. Since it is 4 plus, what kind of a complex this is? It is a cationic complex. Correct? Yeah. And the naming should always start with cation and end with anion. That is the first rule. Yes, sir. And so we have to use the common name, right? Yes, for this we have to use common name. And we need to start with ligands first. And if you see that, this is ethylene diamine starts with E. This is amine starts with A. This is also aqua starts with A. If the same atom, same this thing is present, got it? Yeah. Yeah. In that case, we use the next one. AM here, AQ here, isn't it? Yeah. Yes. Hello. E, AM, and AQ. Okay. So now if you look at this, the first name should start with amine. So I'll write it as diamine, and amine should have double M. I told you that also. And then diaqua, AQA, aqua, and ethylene diamine. Ethylene diamine, AMINE, amine, right? Up to this, the ligand names are done. Then we have to write platinum. We have to write this as platinum. And in bracket, we have to mention its oxidation state, then give a space and write it as chloride. You do not write that dichloride or tetrachloride and so on. You simply write it as chloride. Now, what is in the bracket, Nabita? That is the oxidation state of platinum. See, if platinum oxidation state is X, ethylene diamine is 0, it has no charge. Ammonia has 0, no charge. Water has 0, no charge. Overall, it is +4, right? So we will write in a stock notation or a Roman form as 4. Okay, beta. This is the complete name.
Yes, sir. Sure now, you understood? Yeah, sir. Chalo, next one. If you have K3 FeCN6, you split them into ions like 3K plus and FeCN6 3 minus, right? Now you can see that this is an anionic complex, but the naming should always start with cation. So first I will write this as potassium. So it is potassium, then space. See, between the outer body and the inner body, there should always be a space between. So that Okay. space should be maintained. So potassium space and hexacyanide. That will be hexacyanide, correct? And it should be ferrate now. Sir, why is it cyanide? Any anion ligand will always end with id. If it is ide salt, it will end up with ido. If it is ate salt, it will end up with ato. If it is ide salt, it will end up with ito. Okay. So this is a cyanide, ide salt. So it will become ido. So cyanido. Chloride will become chlorido. Bromide will become bromido. Okay, sir. Got it. Okay. Only in the bracket. Now some students get confused, sir, ये आपने इसको क्यों नहीं लिखा? But ये out of the bracket है ना? Out of the bracket to common name. Okay. When it is inside the bracket means it is ligand. Na? Yeah, sir. Now see the oxidation state. Iron को हम लोग अगर x लेते हैं, so x plus 6 times of -1 overall equal to -3, which makes it x is equal to 3. So in Roman notation or stock notation, we will write it this way. So this is the name. Okay, beta. Yeah. See the next one. K3CrOx thrice. So this is 3K plus CrOx thrice. OX is oxalate. OX is oxalate. And this is 8, so it will become ato. Oxalato. Okay. Oxalate is C2O4 2 minus. And every C2O4 has one 2 minus charge on it. Okay, yes, sir. Therefore, if you check out the oxidation state here, x plus 3 times of -2 overall equal to -3. So x will be equal to +3 here. Now, if you see the name, again, I'll start with potassium. So it will be potassium underscore, okay, trioxalato, chromium, or sorry, chromate, and oxidation state is 3. Okay, beta? Yeah, sir. See the next one. Here it is starting with cyanido. Here it is starting with chlorido. And here it is starting with aqua. So aqua should be written first. Sir, we have to go alphabetically, right? Alphabetically. And so there are 2 aqua. So I'll write it as diaqua. Right? So diaqua. And then dichloro, chlorido, and dicyanide, and nickel. Why I'm writing nickel? Because it is a neutral complex. It has no charge on it. Neutral complexes will always have common. Then oxidation state. See here x plus 2 times of -1 plus 2 times of -1, and water is 0. So x is equal to +4. The oxidation state is +4. So that will be the name. Yeah? Okay, sir. Yeah. See the next one. So this will split into 2 forms, 2Na plus SnO4, SnOH 4 times -2. Correct. So that is going to be sodium. Is going to be sodium underscore, space, underscore in a sense, space. Yes, sir. So here that is tetra. Sir, hydroxide के लिए क्या रहता है? Hydroxido. Okay. Tetra hydroxido, right? And this should be stannate, right? Yeah, stannate and 2 na, in the bracket. In the bracket it should be 2. That is the name. LiAlH for common name. Commonly we call it as lithium aluminum hydride, correct? Yeah, sir. So this is termed as lithium aluminum hydride. Now, if you look at the IUPAC name for this, the IUPAC name will be lithium. First, I would write the lithium part, then space. Sir, here we will not split it.
You are splitting it, no? So it Plus will be ALH plus, right? ALH4 minus. Okay. Yeah, minus. Tetrahydrido. Hydrido. Okay. And aluminate, right? Because it is an anion complex, aluminate, and plus 3. Yes, sir, got it. NaBH4. Now I am writing directly, beta. You should be able to figure it out. So it is sodium space, then tetrahydrido, then सर बोरॉन के लिए क्या रहेगा? बोरेट. Borate and 3. That's it. Nickel DMG. Okay. See, DMG what? DMG is what, you know, this structure. Again, I'll remind you once again. Okay. DMG is this structure where you have double bond N, and we have methyl group here, correct? And O minus, and here we have O and H. इस तरह से होगा तो हम लोग इसको कहते हैं DMG, dimethyl glyoximate. Okay. Yes, sir. Now, see, beta, there are 2 of them, isn't it? But the name also has a die in it, is it? Yeah. Whenever we have a die already in the name of the ligand, again you cannot die for numbering. Okay. So for numbering, you will use a Greek, Greek method. That is, if it is 2, we call it as bis. If it is 3, we call it as tris. If it is 4, we call it as tetrakis. If it is 5, we call it as pentakis, and so on. Sir, agar it was 3, like, and 2 and 3, so you have to use tris. Sir, but why can't we use di-tri then? Because it is not same now. No, it is not about the same die and die. If you have 3 here, or if you have 4 here, I will still use the Greek word. Okay, sir. Once you get a die, tri, or anything within the naming, correct? Yes. Then again the Latin wording is not used. That is a rule. Okay. Sir, for inside it will be written TMG for tri, like that. Like, how will it be written for 3? While writing IUPAC 9, you will write everything. Now I'll show you the writing. See how it is. It is going to be bis. First we'll write bis. Okay. Dimethyl glyoxymeto. Mate will become ato, right? Dioxymeto. Yeah. And that will close the bracket. Okay. Dioxymeto and nickel. And in bracket, oxidation state. See, one DMG has -1 charge. You know? So 2 DMG will have -2 charge. So if you take it to the other side, it will become +2. Yeah, sir. That's it. Okay. Yeah. So that will be nickel DMG twice. Next. Here, if you see cobalt with En twice, OH twice, Cl twice, see the alphabetical order first. It starts with E, starts with H, starts with C, right? So again, we'll split this as K3K plus cobalt, En twice, OH twice, and Cl2 for all 3 minus, isn't it? So now if you name it, we start with dichloro. Right? So dichloro. And again, this is ethylene diamine, isn't it? This is ethylene, En is ethylene diamine. So if it is ethylene diamine, again there is 2 here. So what do we use, beta? Bis. So bis, ethylene diamine, clear? And then again I would use it as dihydroxido, cobaltate underscore in this bracket. What is the oxidation state here? So X -4 equal to -3. So X is equal to +1. The oxidation state is +1. Clear? Or why did you write it as bis ethylene and not, again we can't use diethylene? देखो बेटा, ethylene diamine.
within the ligand, there is a di coming, no? Okay, okay. Yes, The sir. minute we get either a di, tri, tetra, anything in the ligand itself, correct? And we cannot use the same method for writing the numbering. Okay. Okay. Now, is that clear, Vita? Yeah, sir. Right. Next one. HgCOSN4 twice. Okay. See, outside when you do not know the oxidation state, you always use the common oxidation state. Mercury common oxidation state is +2. So we'll use that as +2. And cobalt SnO4 2 minus. So now what is the name here? First, we'll write it as mercury. Mercury. Sir, we'll use a common name for the cation. This is not a cation. This is anion. Complex part, dekho. Complex part is anion, right? Okay. Complex part is anion, so we have to use common name for. No. We have to use 8. 8 wala, right? So it is tetra. No, sir. I asked why we wrote mercury and not. Hg. Hg is mercury, no? Acha. Why didn't we? It is outside, na, beta? Those rules are applicable only for complexes Only inside. Okay. Tetra thiocyanidO, right? TetrathiocyanidO, cobaltate, and the oxidation state is 2. Clear? Sir, what is the oxidation state of SCN? Minus, SCN minus. It is a cyanide only with S. Okay, sir. So next one, nickel CO4, carbon monoxide has 0 charge. Overall compound also has 0 charge, which makes the oxidation state of nickel also 0. Okay. So oxidation state of nickel is 0, and there are 4 of them. So I can call it as tetracarbonyl nickel 0. Okay. Sir, here we don't have to split it. Where, beta? Where? How do we split it? There is nothing outside, no? This itself is a neutral complex. So Okay. let me mention that also. It is neutral complex. Correct? And since the oxidation state is also 0, I'm writing it as 0 in the bracket. Okay, sir. Yes. Next. Suppose if this is how it is given, beta. ऐसे आपको दिया है compound. Yes, sir. This is like complexes, 2 complexes. Anion is also a complex, cation is also a complex. And left side usually is always the cation part, right side is always the anion part, right? Yeah. For such kind, beta, अगर ऐसे kind होते ना, दोनों metal के, whether it is same or different, they usually have same oxidation state. Okay. Usually Sir, zinc shows which oxidation state, huh? Sir, I didn't understand. If there are two, then they are If same there are or 2 metals here, this metal and this metal, whether they are same metals or different metal. Imagine this is zinc and the other side there is cadmium. okay. So it does not matter whether it is zinc or cadmium. That is what I'm saying. Okay. Okay, sir. But both of them will have same oxidation state. Sir, so here if it was, we can't put any other cation with a lower oxidation state, right? No, that kind of complexes don't exist. So this kind of complex will only exist when both the metals have same oxidation state. Okay. Okay, sir. That is the first thing. Second thing is, see, one is a cation, the other is an anion. So both of them should have same charge, no? Equal and opposite charges. Correct? Yes, sir. So that is why you can easily make out that if at all I put -2, zinc will get +2 oxidation state. And if at all I put +2 here, zinc will get +2 oxidation state, isn't it? Yeah, sir. Therefore, what we can say here, so left side is a cationic part, right side is an anionic part. So we will write it from left side here, saying that this is tetra. सर Okay. क्वेश्चन में वो लोग ऑर्डर चेंज करके भी दे सकते थे क्या? हाँ, वो आपको immediately change करना पड़ेगा. Okay. Okay. So tetraamine. Okay. And because this is a positively charged complex, so I will write only the common name, which is zinc, in bracket +2 underscore, right? And this side it is tetracyanidO,
tetracyanidO, and here it will be zincate, isn't it? Zincate with +2. Yeah? Yes. Next वाला we can write it down easily. Same thing. यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया +4, right? So यहाँ पर +3 लिखा मैंने, and यहाँ पर -3 लिखा, sorry -3 लिखा इधर मैंने, -3 and +3 लिखा है, तो दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो जाएगा. Now I can have this as Sir, always it will be in the common oxidation state. yes beta, hexaamine nickel, simply nickel, and in bracket 3 and then space, and we have hexachloro nickel. Sir, it will not be chlorido. Nickelate. Chlorido, sorry. Chlorido. Yeah. Need to have this as chlorido. Okay. Yes. And nickelate. The oxidation state here is also 3. Done? Yeah, sir. Right. Next one. In case these are called bridged compounds, just like how we have in organic, how we have bridged compounds, here also these are bridged compounds. Okay. So in bridged compounds, beta, dekho, these are the ones which are making a bridge between two metals, isn't it? They are giving ligand system on both the sides, you know. So the bridged ligands are always represented by mu, or kyunki alphabetically C should come first, I will write it as mu chlorido, and mu hydroxido, okay. And what is this one? Chlorine, PH3. This is the same compound, left side and right side, correct? Yes, sir. So that I can use that as bis now. So bis, okay, bis, and this is chlorido, isn't it? So this is chlorido, and this is triphenyl phosphine, right? So this is triphenyl phosphine start with T, chlorido start with C. So which one should be preferred? C. Chlorido. So bis, chlorido, and triphenyl phosphine, right? And with platinum, isn't it? So platinum and underscore. So you basically bracket लिखनी just as okay. And in the bracket, what do we get the oxidation state? See, think like this. ये overall oxidation state to 0 है ना? Sir. So I can say that there are 2 platinums plus there are 3 chlorines with -1 charge plus 1 hydroxide with -1 charge, overall equal to 0. So 2x is equal to 4, so x is equal to 2. Sir, वो PPH3 का 0 रहता है. क्या बेटा? हाँ, 0 is 0. PPH3 is 0. Sir, and that sign, that mu chlorido, what is that sign? What is the use of that sign? Showing that it is on the bridged form. How do we differentiate, like which is on the bridge, right? So yes. mu always represent that these groups are on the bridge. Okay. So on both sides, it has to be same or it can be different also. That's Cl and PPH3. Say it again. सर वो Cl और PPH3 के जगह पे और भी कुछ रह सकता है, मतलब कि दोनों साइड पे सेम रहने चाहिए कि अलग भी रह सकता है? अलग भी हो सकता है, अलग होगा तो बिस नहीं लिखोगे, आप पूरा एक्सटेंड करके लिखोगे. ओके. नेक्स्ट वाला देखो. सो नेक्स्ट वाला इज अ सिमिलर फॉर्म. Here we can see it is like, क्लोरीन है तो क्लोरीन को सेपरेट कर दो, ये पूरे के ऊपर +4 चार्ज आ जाएगा, राइट? हाँ सर. एंड हियर इट इज NH, एक NH है, एक NH2 है बेटा. सो NH इज ओके amide, which you call it as amido, and NH2 is amine, which you
call it as amino. Okay beta, दोनों में difference समझना. Okay, Yes, sir. only one H, it is amido. If they have two hydrogen, it is amino. So alphabetically, which should come first? Amido should come first, right? So we'll write it as mu amido and mu amino, correct? And bis, right? Bis tetra, uh, tetraamine, bis tetraamine, cobalt. Sir, why are we writing amine and not amine? वो ido या ऐसा कुछ नहीं लगाएंगे उसके पीछे? ये न्यूट्रल है ना, NH3 is neutral. ये चार्ज्ड है, NH2 minus, this is NH minus. Okay. अच्छा. So tetraamine, see, I'll write it here. NH2 minus is called as amide group. That will become amido. NH2 minus, that is amino. NH3 is amine. No amino, okay? Only amine. Yes. Last one, okay? ये देख. Normally copper and H2O रहेगा. कैसे लिखेंगे हम लोग? If you split this, you'll get this as Cu H2O4 overall plus 2. And then we have SO4 2 minus. Okay, so we can say that this is tetra. सर वो और एक H2O उसका क्या करना है? कुछ नहीं होगा उसका. टेट्रा aqua copper, tetra aqua copper 2 underscore sulfate. That's it. वो वाटर का हम लोग कुछ नहीं कर सकते. सर aqua के लिए हमेशा aqua ही लिखते हैं कि aqua में भी कुछ रहता है ऐसा? नहीं, सिर्फ aqua. Okay. Clear beta? I think I've given you sufficient IUPACs. Given any cases, you should be able to figure out. बाकी सब मैंने assignment में डाल रखा है. Okay. Okay, sir. Next. See, there are mostly 5-6 theories which explains all the information regarding the complexes. The first of them being Warner's theory. Warner's theory mainly tells about what is primary valency and secondary valency. Okay, let us focus on that. So metal has two types of valencies. One is primary valency. Primary valency is nothing but the oxidation state of central metal atom. Okay, beta? Oxidation state of central metal atom. Secondary valency, which means it is the coordination number, which is number of electron pair attachments. How many electron pairs are attaching from one particular direction? हो सकता है कि इथिलीन डायमाइन एक ही है बट कनेक्शन दो दे रहा है ना, करेक्ट? और मतलब Suppose if I give you cobalt En thrice plus 2 plus 3. Now ask you, what is the secondary valency of this complex? What do we say? secondary valency means the Coordination number, which means how many number of ligands we have. Okay. So So here it appears like there are only 3, correct? But every ligand is giving 2 connections now, because ethylene diamine is bidentate, isn't it? The answer is not 3, it is 6. So secondary valence is the number of electron pair attachments. It is not just the number of ligands. Okay. Yes, sir. Next, you can see primary valencies are satisfied by negative ions. Okay, which means oxidation state कैसे find करते हैं? अभी तक हमने किया ना oxidation state find करना. So we will try to figure out what is the oxidation state of central metal atom. Next, ions which satisfy only primary valency are ionizable. Okay, which means we might have primary valency also, secondary valency also in one. Sir, last point समझा नहीं. Okay, let me show you. Suppose if I write it this way, CO, okay, Cl3 dot NH3, sorry, dot
4 times of NH3. Okay. So dot 4 NH3 is okay. Yes, This is a sir. typical way of writing a salt, beta. Right. This is a typical way of writing a salt. But in coordination complex, if you want to show it, how it looks like, it is like this. Cobalt is actually connected with 4 ammonia and 2 other chlorines. 2 other chlorines, it is attached like this. CO, NH3, 4 times Cl2. And Cl is outside. This is how the actual complex is. Okay. 1 second. So this is how the actual complex is. Okay. Now here you can see there are 6 ligands and outside there is 1 chlorine, right? Now what Warner's theory tells us that you put all the complexes and show that they are giving the sigma bond like this, and we have 2 chlorines here, correct? But there is 1 chlorine which is only making an ionic bond with this cobalt, no? Yes, sir. So that 1 chlorine will be attached this way. Okay, but these 2 chlorines will also be giving these 2 chlorines which are there. They are satisfying the primary valency as well as secondary valency, isn't it? They are inside, so they are satisfying secondary valency, but they are part of calculation of oxidation state also, no? X plus 2 times of -1 overall equal to +1. इस तरह से जाके x is equal to +3 आ रहा है, बराबर बेटा? हाँ, sir. So those chlorines are a part of primary valency also, which means they are helping in, I mean, because they are charged, they are important for calculating oxidation state. Second, 1 chlorine is only satisfying primary valency. It is not satisfying secondary valency. Yeah, beta. Yeah, sir. That is what it meant. See, the ions which satisfy only primary valency are ionizable. Can you see that? This is only making primary valency. This dots represents only primary valency. Here, Okay. only PV means primary valency. Sir, While here it is giving primary both. valency. What beta? टिका बोलोगे, बोलो बेटा आगे. Primary one, sir, primary valency to the Your voice is breaking. I don't know why. sir, primary valency. Huh? Hello. Now I can. Sir, it is due to the one which is outside the bracket, right? Due to the? Due to the one which is outside the bracket, or outside the bracket. Outside the bracket. okay. And sir, whatever is contributing for oxidation state will be the secondary valency. Huh? Sir, the one that Yes, is yes. They are the chlorine with the the bold line which I wrote, that is for secondary valence. Okay. The bold line with a dotted line which is there. Okay. Bold line with a dotted line is there. That is for both. Basically, chlorine here is giving both primary also and secondary also. Okay, sir. Yeah, beta? Okay, yes, sir. One minute.
sorry. See. Now look at secondary valence. Secondary valence is satisfied by the negative ions and neutral molecules. Can you see that? This is right. It can be satisfied by the neutral molecules as well as negative ions, isn't it? Yes, sir. Right. And it is equal to the coordination number and fixed for a certain metal. So you can see the coordination number is 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. What Warner's theory tells us बेटा कि मेटल का ना वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है, ऐसा जरूरी नहीं है. दिस इज ओनली अकॉर्डिंग टू वार्नर्स थ्योरी. ओके. Okay. Next, if negative ions satisfy only primary valency, compounds like COCl3.6H3 are formed. मतलब यहाँ पर देखो, all 6 ammonia will be involved into complex formation. यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Now all 3 chlorines are only giving primary. No, they are not part of the secondary. Yeah? Yes, sir. Right. So ऐसे केसेस में वैसा होता है. तो आपको केस देकर आपको ऑप्शंस पूछेगा कि ये केस है, बताओ क्या क्लोरीन इज गिविंग बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी और ओनली प्राइमरी. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड. So how will we come to know whether it is giving both primary and? Always give 6 ligands as the priority. मतलब definitely 6 ligands तो होने ही चाहिए. Okay. So you can take this 6 ligands. तो 6 तो यहीं पे खत्म हो जा रहे हैं ना, तो क्लोरीन को चांस ही नहीं मिलेगा. So it has no other way but to be outside. Sir, but 3 मतलब ऐसा भी हो सकता है ना, 3 chlorine और 3 NH3. हाँ बेटा, लेकिन देखो क्या होगा, अमोनिया बाहर नहीं रह सकता ना, क्योंकि न्यूट्रल के साथ न्यूट्रल रह ही नहीं पाएगा. कोई चार्ज तो होना चाहिए ना उन दोनों के बीच में. हाँ, ओके. करेक्ट. सो पहले न्यूट्रल को प्रेफरेंस इसलिए मिलता है ताकि वो न्यूट्रल सारे कंबाइन कर जाए मेटल के साथ. हाँ, अगर एक्स्ट्रा वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो जो चार्ज है वो उनके साथ कंप्लीट करें. ओके. सर, तो ये स्ट्रक्चर करेक्ट है कि रॉन्ग है? करेक्ट है, करेक्ट है. ये स्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट है. अच्छा. तो तीनों क्लोरीन हमने सिर्फ और सिर्फ आयनिकली बॉन्ड किए उसको. सर, तो ऊपर वाले एक स्ट्रक्चर में ऐसे अलग, मतलब why was it that 2 chlorines were participating? See, here we had only 4 ammonia, है ना. मैं 6 ligand कैसे बना पाऊंगा? नहीं बना पाऊंगा ना. हाँ. So I had to use 2 more chlorines because according to Warner's theory only 6 ligands will exist. मतलब 6 वाले ही complex exist करते हैं. अब सारे कॉम्प्लेक्स 6 के ही रहते हैं. हाँ, ये एक्चुअली में जरूरी नहीं है. इट इज अकॉर्डिंग टू वार्नर्स थ्योरी. ओके. Okay, yeah, sir. So we will see there are complexes which are 2 also, 3 also, 5 also, right? But according to Warner's theory, what he learned कि मुझे जो उसने, he is the first person who was able to figure out some complexes present. Okay. And he saw all of them are 6 ligands only. So he concluded कि हो सकता है सबके सब 6 ligand ही हो जाए. Okay. Okay, sir. Yes. Now see, if negative ions satisfy both primary and secondary valency, then the following complexes will form. See like this, COCl3.5H2. तो कॉम्प्लेक्स ऐसे रहेगा, एक क्लोरीन अंदर रहेगा, 2 क्लोरीन बाहर, है ना. अगर 4 रहेगा तो 2 क्लोरीन अंदर, 1 क्लोरीन बाहर. अगर अमोनिया 3 रहेंगे तो बाहर कुछ भी नहीं रह पाएगा. करेक्ट. हाँ सर. आई होप नाउ यू गॉट दैट. यस सर. ऐसा एक टेबल आपको पूछ सकते हैं कि देखो, अगर COCl3.6NH3 है तो प्राइमरी वैलेंसी कौन बना रहा है? ऑल 3 क्लोरीन्स. सेकेंडरी वैलेंसी ऑल 6 अमोनिया. करेक्ट. नाउ इफ यू रिएक्ट, अभी इसका मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा? ऑल 6 अमोनिया विल बी इनसाइड, 3 क्लोरीन्स विल बी आउटसाइड, है ना. सो इफ यू ट्रीट दैट विद AgNO3, we know that silver and chlorine will make a precipitate, तो हमको 3 moles of AgCl मिलेंगे, है ना. तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आप बताओ ये वाला कंपाउंड कितने मोल्स ऑफ AgCl दे सकता है. ओके. तो
तो कितने मोल्स देगा बेटा? 3 मोल्स। एंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मींस पॉजिटिव चार्ज वर्सेस नेगेटिव चार्ज कितना है। सर तो और जितने बाहर बचेंगे उतने ही मोल्स ऑफ AgCl दे सकता है ना? हाँ बेटा, उतने ही AgCl दे सकता है, अंदर वाला आएगा ही ना बाहर। हाँ ओके। ये देखो, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मींस पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव चार्ज कितना है आयंस। देखो पॉजिटिव का एक ही आयन है +3 चार्ज के साथ, और नेगेटिव के 3 आयंस है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 1:3 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, यस सर। करेक्ट। नेक्स्ट, वैन हॉफ फैक्टर। वैन हॉफ फैक्टर तो पता है ना, नंबर ऑफ आयंस दैट विल स्प्लिट। 1 + 3 टोटल कितने आयन स्प्लिट हो रहे? 4। सो इट इज वैन हॉफ फैक्टर इज 4। जेई यस में कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसे कॉम्प्लेक्स, ठीक है। प्राइमरी सर, वैल्यू, Van 't Hoff factor will be the total क्या, like 1 is total to number of ions, positive, yeah. negative, all included. Sir, but all of these are only according to that Warner's theory, na? हाँ बेटा, but this representation is taken valid. I mean, this representation is taken universal. Okay? Sir, according to Warner, it can only form 6 and हाँ, 6. now I'm coming there. Listen, listen. Suppose अगर मेरे पास ऐसा केस होता 3.2NH3, ठीक है, ऐसा सर वार्नर ने क्या सब COCl के ही लिए बोला था ना क्या? एक एग्जाम्पल लिया है, वार्नर अच्छा ने बहुत सारे भी किए हैं, ये हमने CO को एक रेफरेंस मान के किया है। okay? ओके सर। हाँ अगर ऐसा होता तो ये तो दोनों मिला के भी 6 नहीं हो रहे ना बेटा, हाँ सर। दोनों मिला के भी 6 नहीं हो रहे, तो उस टाइम पे आप 4 के बारे में सोचोगे, 2 के बारे में सोचोगे, 3 के बारे में सोचोगे, बट वो अपने सिलेबस में है ही नहीं। हम लोग को सोचना है सिर्फ 6 के बारे में, ठीक है। ओके सर। आपको अगर यहाँ पर ऐसे दे दिया, कभी कभी ऐसे दे देता COCl2, और यहाँ पर दे दिया 5, राइट, सॉरी यहाँ पे दे दिया 3, तो अभी भी तो मैच नहीं हो रहा है ना। हाँ सर, नहीं हो रहा है। तो ऐसे केसेस आपको नहीं दे सकता है वो आपको वही केसेस देगा जहाँ पे दोनों मिला के 6 बन जाए। ओके, अच्छा हाँ राइट। नेक्स्ट COCl3.6NH3, इफ यू चेक इट आउट, देखो इसमें से 6 के 6 अंदर आ गए। अच्छा मैंने फिर से वही लिखा सर, इधर इधर। नेक्स्ट देखो, COCl3.5H2O है। स्ट्रक्चर में क्या लिखना है क्या बेटा? ये लिखा, ये सर? वो स्ट्रक्चर में क्या लिखना स्ट्रक्चर में क्या लिखा है? स्ट्रक्चर इधर है? जगह नहीं था, इसके लिए इधर लिखा। स्ट्रक्चर कॉलम। स्ट्रक्चर लिखने का जगह उधर नहीं था ना, कॉलम में, इधर लिखा। ओके, हाँ सर, गॉट इट। यहाँ पे देखो फिर से सेम, 5H2O अंदर, 1 क्लोरीन अंदर, 2 क्लोरीन बाहर, बराबर। ये हाँ क्लोरीन सर। प्राइमरी वैलेंसी दे रहे हैं तीनों के तीनों, तो प्राइमरी वैलेंसी तीनों क्लोराइड से आ रहा है। सेकेंडरी वैलेंसी 5 अमोनिया 1 क्लोराइड से आ रहा है, ठीक है। प्रेसिपिटेट्स कितने बनेंगे? 2 मोल ऑफ AgCl बनेंगे ना, क्योंकि 2 Cl आउटसाइड है। हाँ इलेक्ट्रोलिटिक रेशियो क्या रहेगा? 1:2 रहेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ये वाला एक पॉजिटिव चार्ज और 2 नेगेटिव चार्ज, यस बराबर। सर। आई फैक्टर 3 रहेगा। ये स्ट्रक्चर रहेगा, देखो समझ में आया? सर स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, मतलब जैसे ऊपर ऑक्टाहेड्रल था ऐसा इसको क्वेश्चन आया है जेई में, उसने स्ट्रक्चर देके बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज करेक्ट, ठीक है। अच्छा आपको क्या करना है, आपको जो न्यूट्रल वाले होते हैं वो तो सिर्फ सेकेंडरी दे रहे हैं, है ना, हाँ क्लियर। अच्छा यहाँ पे वाटर है, मैंने वो प्रीवियस का कॉपी कर दिया, H2O, ओके। So H2O, 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 H2O एंड H2O, बराबर। और सर। ये जो दोनों क्लोरीन है बाहर वाले, वो तो सिर्फ और सिर्फ आयनिक बॉन्ड ही दे रहे हैं ना बेटा, हाँ और ये जो क्लोरीन है वो दोनों दे रहा है, आयनिक बॉन्ड भी दे रहा है और कोवेलेंट बॉन्ड भी दे रहा है, राइट। हाँ सर, यस। क्लियर है ना? और ये एक न्यूट्रल रहना जरूरी है क्या, मतलब H2O और Cl लाइक दोनों भी चार्ज नहीं रह सकते ना? हम्म, और एक न्यूट्रल रहना जरूरी है क्या? H2O NH3 ऐसा कुछ, तो मतलब Cl और एक चार्ज स्पीशीज नहीं रह सकता साथ में? बेटा ये बहुत लिमिटेड टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स की बातें कर रहे हैं, करेक्ट। अच्छा जब तक वार्नर्स के थ्योरी के अराउंड है तब यही इनके बारे में डिस्कशन हुआ, ठीक है।
ओके बट वी हैव लॉट्स ऑफ अदर कॉम्प्लेक्सेस जो आगे जाके बहुत सारे डिस्कवर हुए हैं, यू नो, वी आर एबल टू मेक आल्सो, इजंट इट? वो सब चीजें आगे पढ़ लेंगे हम लोग, बट वार्नर का थ्योरी जब तक है ना, सिर्फ उसने इतना ही सोच पाया था। ओके, ओके ठीक है सर, ओके। तो अगर 4NH3 है तो सेम केस यहाँ पर 4 अंदर आ जाएगा, 2 क्लोरीन 1 बाहर, तो 1 मोल ऑफ AgCl बनेगा, 3 हाँ क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी शो करेंगे, 4+2 मिला के सेकेंडरी वैलेंसी, ये 1:1 रेशियो मेंटेन करेगा, आई फैक्टर 2 होगा। दैट्स इट। यस सर। लेट अस सी व्हाट इज सिडविक्स EN थ्योरी। अच्छा, ये EN थ्योरी क्या है बेटा? इट इज नोन एज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी। इट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ द नियरेस्ट इनर्ट गैस, राइट? सो देन वी से द कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल। मतलब देखो, 3D सीरीज में मोस्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा है, एलिमेंट कौन सा है? क्रिप्टॉन, राइट? बिकॉज इट विल गेट 36। 4D में जीनॉन, 5D में एंड में आता है रेडॉन। ओके, ये जो 36, 54, 86 है ना, these are very stable configurations, isn't it? So what he believes, what Sidgwick believes, कि कॉम्प्लेक्स इसलिए ही फॉर्म हो रहा है ताकि वो उनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इनके क्लोज आ जाए, या तो 36, या तो 54, या तो 86 के क्लोज आ जाए। Got it? Okay. For that he made a formula. He said that to calculate the effective atomic number, you take number of electrons of the CMA, which is atomic number. ये atomic number हो गया ना, atomic number minus oxidation state plus number of electrons gained by CMA, which means ligands. जितने लिगेंड्स है उसको into 2 कर दो, बिकॉज एक एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है ना। सो सब देखो मैं सब लिगेंड्स 2 ही कैसे देते हैं? अरे बेटा, ये सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स है ना। These are अच्छा all coordinate bonds. Coordinate bonds means they are giving 2 electrons each. Metal is not giving anything. ओके हाँ। They are all going and putting in the metal. Metal के साथ share कर रहे हैं. Okay. They have to give 2 electrons only. Now En should be equal to Z, which is the atomic number, minus oxidation number, oxidation state or oxidation number of the metal, plus number of ligands into 2. I hope that is clear now. Yeah, sir. Now let us try to figure out that in each and every question. See, FeCN6 -3 है, इसका En वैल्यू चेक करते हैं कितना होगा। En will be atomic number of iron is how much बेटा? 26 plus minus oxidation state कितना आ रहा है? 3 आ रहा है ना इसका, आयरन का 3 प्लस कितने 6 लाइगेंड से एक एक इंटू 2 कर दो, राइट? सर ये माइनस ऑफ -3 नहीं होएगा क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है बेटा, अगर -3 आयरन का, हाँ हाँ यस सर, राइट। सो ये आ जाएगा 35, व्हिच इज वेरी क्लोज टू 36 ना। या ये स्टेबल है, नॉट वेरी स्टेबल, लाइक यू नो 36 अगर तो कहता है कि बहुत अच्छा स्टेबल। ओके सर हाँ। लाइक सेकंड केस देखो, EAN, राइट? यहाँ पे कितना हो जाएगा? 26 -2 प्लस 6 इंटू 2, ये हो गया 36। मतलब ये ज्यादा स्टेबल है, राइट? सर ये केस में 2 ऑक्सीडेशन नंबर 2 ऑक्सीडेशन है, स्टेट x -6 इक्वल टू -4, सो x इज इक्वल टू +4। हाँ यस सर। थर्ड केस में, सो अकॉर्डिंग टू सिडविक थ्योरी B इज मोर स्टेबल देन A, है ना? ये दोनों में ये ज्यादा स्टेबल। क्लियर? यस सर। प्लैटिनम का चेक करते हैं। PtCl6 2-, प्लैटिनम ऑक्सीडेशन स्टेट इज 78, यस sorry, atomic number is 78, so EAN will be equal to 78 and minus oxidation state is 4, है ना? So plus 6 into 2, right? तो कितना हो रहा है बेटा? ये 12 हुआ, right? So 12 plus 2, 12 plus 90 हो रहा है, 90 minus 4 कितना हो रहा है? 86। मतलब रेड ऑन क्यों पहुंचा ना? हाँ सर। वेरी स्टेबल देन। हाँ Cl621, this is very stable. इधर देखते हैं EAN, क्रोमियम, क्रोमियम is 24
माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट इज 3 प्लस 6 टाइम्स, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ लिगैंड साइट्स देखना है बेटा, नॉट जस्ट नंबर ऑफ लिगैंड्स, ओके। डोंट थिंक ये 3 है तो 3 लेना चाहिए, नो, बिकॉज एवरी ऑक्सिलेट इज अ बाइडेंटेड ना, हाँ ओके। इट इज अ बाइडेंटेड, दोनों तरफ से कनेक्शन देगा। राइटिंग इट एज 6 into 2 ना हो जाएगा, देखो, सो दिस इज 33 ना, 33, नॉट वेरी क्लोज इजंट इट। या सर। इसके लिए माना जाता है कि क्रोमियम के कॉम्प्लेक्सेस बहुत स्टेबल नहीं होते, ओके। नेक्स्ट, ओके सर। नेक्स्ट फेरोसिन। फेरोसिन कैसे होता है? फेरोसिन इज अ कंपाउंड विच इज फॉर दिस वन, ठीक है। इसमें देखो स्ट्रक्चर कैसा है, दिस ईटा मीन्स व्हाट, ईटा मीन्स दिस, सपोज इफ यू हैव C5H5, ऐसे डबल बॉन्ड है और ये माइनस है, okay, this is C5H5 minus. See, this will always be under resonance and this is aromatic, isn't it beta? हाँ सर। So if I write it this way, right, showing that ये ring है with negative charge, okay, and there is another compound with ring and negative charge, and both of them are giving electrons to iron, right? Which means it is Yes. not one pair, it means all 3 pair of electrons are giving electrons, समझा? This is pair number 1, pair number 2, pair number 3, okay. So all 3 pair of electrons are supporting metal. From bottom also there are 3 pair of electrons supporting the metal. So it is like this is a tridentate now, this is also a tridentate now. ठीक है, understood बेटा? सर एक बार वापस एक्सप्लेन करो ना। देखो देखो, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने चेक करना है, राइट। एरोमेटिक में बेंजीन में कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सर बेंजीन में टोटल बेंजीन में टोटल पेयर्स कितने होते हैं जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है? 3 पेयर्स ना ऑफ इलेक्ट्रॉन। 3 pairs, 3 pi bonds means 3 pairs, 3 correct? पेयर हाँ। Here there are 2 pi bonds and 1 lone pair. So कितने pairs हो गए? 3। यहाँ पे भी 3 हो गए ना? So हाँ that is सर। what I'm saying. Every pair is acting like a ligand. ओह अच्छा। So ऐसे कितने pairs आ रहे हैं? 3 pairs, right? So एक ऐसा रिंग है, प्लेनर रिंग है, यहाँ से पूरा ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फोकस कर रहे हैं मेटल को. हाँ Got it? So which means all 3 pair of electrons are supporting metal. और एक नीचे से है वो भी पूरा 3 pair of electrons सपोर्ट कर रहा है ऐसे मेटल. ओके हाँ समझा सर। राइट, सो नीचे से 3 ऊपर से 3 है ना. सो कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो हाँ गए अभी? सो लेट अस फाइंड द EN नंबर नो. 26 द एटॉमिक नंबर और एक एक के ऊपर माइनस चार्ज है, 2 है वैसे तो आयरन के ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा. सो 2 प्लस नंबर ऑफ ligands आर 3 and 3 6 pairs and each and every one is giving 2 electrons. कितना हो गया? 36. देखो, that's why ferrocene is very very stable. डाउट है पूछो बेटा, मैं फिर से बता दूं. दीपिका, हरी देर बेटा, दीपिका. सर वो 2 कैसे आया? -2। सर वो -2 कैसे आया, वो वापस से बोलो ना। हाँ, एक मिनट बताओ. देखो यहाँ पे एक C2H5 का चार्ज है -1 ना बेटा, एक C2H5 पे एक -1 चार्ज है ना, इस पे हाँ भी एक सर। -1 चार्ज है. सो x, ये x मानो -1 -1 और इक्वल टू 0. x कितना हो गया? 2. बराबर. यस सर। और ये N5-6C5H5 मतलब क्या रहता है उसका? क्या बेटा? सर वो ब्रैकेट में जो हाँ, लिखा अभी वही बता रहा हूँ. अभी देखिए ये क्या है ना, ईटा, इसको कहते हैं ईटा. दिस इज कॉल्ड एज ईटा.
eta represents that electrons are all resonated. They are not expected on only one carbon, they are expected on all carbons. अभी carbons कितने हैं? 1 2 3 4 5, so it is resonating on 5 carbons. That is what it meant. ठीक है, राइट. सेम वे यहाँ पर देखो eta 6. सर आपका लैग हो रहा है. अभी भी लैग हो रहा है सर? अभी ठीक है. हाँ अभी ठीक है. सर आप लास्ट स्टेटमेंट रिपीट करो ना. हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वाले में eta पावर 6 लिखो या पाई लिखो, ये दोनों का मतलब सेम ही होता है. यहाँ पर भी eta पावर 5 लिखो या पाई लिखो, इट इज द सेम थिंग. ओके, सो इन दिस केस ये कैसा है, बेंजीन है दोनों तरफ ऐसे, इधर ऊपर बेंजीन है और नीचे बेंजीन है और बीच में क्रोमियम है. तो बेटा तो ऊपर से सपोर्ट मिल रहा है और नीचे से सपोर्ट मिल रहा है. ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर. अभी eta पावर 6 मतलब क्या है, these are resonated electrons and it is moving on all 6 carbons. Understood? ओके. हाँ. तो अभी En कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, क्रोमियम इज 24 है ना. अब बेंजीन के ऊपर तो कोई चार्ज होता नहीं है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का 0. हाँ. प्लस देयर आर 6 ligands which are 6 pair of ligands into 2. कितना हो गया, दिखा रही देर बेटा, कहीं Yes, sir. Sir, you are on mute. वन सेकंड बेटा, इधर पावर गया है. अच्छा. Okay. मोबाइल, see me right? I'll keep my cam off. Okay, Yeah, sir. so you can see 24, right, minus 0 plus 6 into 2. Clear? So how much it is now? So 12 plus 24, तो 36 हो गया ना. सर वो 6 into 2 क्यों किया आपने? 6 pairs of electrons था ना इसके लिए. Yes. Okay. तो डाउट बेटा भी. सर प्रीवियस वाले में भी हाँ वो 1 लोन पेयर भी था. ओके, गॉट इट. है ना. Done बेटा. Now, let us talk about the next important theory. ये तो Warner's theory हो गया. Okay. The next theory is valence bond theory. Also known as VBT theory. So, according to valence bond theory, it is all about hybridization beta. Okay. So here we are expecting that vacant orbitals of central metal atom, okay, mix together to give hybridized empty orbitals. And this is the orbitals in which the ligands will get connected. Okay. Okay. Which means ligands overlap with hybridized orbitals of CMA
hybridized orbitals of CMA to make complex structures. Yeah. And Okay. it all depends upon what hybridization it is. If it is sp3, it will give tetrahedron and so on. Correct? Now, Yes, sir. there are many different types of hybridizations which we will see. इनमें से कुछ को कहते हैं हम लोग inner orbital complexes. Say something or inner orbital complexes. Inner orbital complexes as in like n minus 1 into d plus ns plus np. ये वाले कनेक्ट हो गए. ऐसे अगर कनेक्ट हो रहे तो we might get different hybridizations. First we might get dsp2, we might get dsp3, we might get d2sp3 here, or we might even get d3sp3. Such type of hybridizations, right, are called inner octahedral complexes. dsp2 होता है, so that will be square planar in shape. This is square planar in shape. This is trigonal planar, trigonal bipyramidal in shape. Trigonal bipyramidal. If it is d2sp3, it is octahedral. Is octahedral, and this is pentagonal bipyramidal. Pentagonal bipyramidal. Okay, beta? Yes, sir. Right. Most of the time हम लोग इसमें से ये दोनों ही सबसे ज्यादा करेंगे. एक तो स्क्वायर प्लेनर और ये इनर ऑक्टाहेड्रल हो जाए, इनर कॉम्प्लेक्स होगा. d2sp3 ये भी इनर कॉम्प्लेक्स. करेक्ट. सो इसको ऐसे बोलते हैं आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स या इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. Since this is inner octahedral, so we'll say this as inner octahedral complex. Similarly, we can have outer orbital involved for hybridization, and we'll get various hybridizations here, which means ns, np or nd wale orbitals involved over beta. In such case, we might get first only sp3 without involvement of d. We might get sp3d. We might get sp3d2 and sp3d3 and so on. sp3 होगा तो क्या होता है बेटा? टेट्राहेड्रल है ना, ये तो हमने पढ़ा है पहले. This will be tetrahedral in shape. sp3d is trigonal bipyramidal and sp3d2 is octahedral. Here, for example, if an hybridized orbital is forming by 4s, 4p and 4d, okay beta, then we say it as outer octahedral complex. If an hybridized orbital is forming by 3d, 4s and 4p, we call it as inner octahedral complex. Idea clear है बेटा? नितिका, clear बेटा? सर वो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, मतलब इनर आउटर वैसे मतलब करेंगे ना, अभी पूरा वही करना है. ओके. एटलीस्ट एक 20-25 क्वेश्चन करेंगे ना, तभी आपको लगेगा कि हाँ कैसे पहचानना है, कौन सा इनर है कौन सा आउटर है. ओके. यस. Now, these are just the headers, these are just the highlights. Okay. Fourth point or fourth bullet point is about there are two types of ligand nature exist. One we say SFL, which means strong field ligand. Strong field ligands. Got it? So strong field ligands होते क्या है? This in presence of SFL, okay, electrons in central metal atom will pair up
will pair up. मतलब सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाएंगे बेटा. ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम अनपेड इलेक्ट्रॉन सारे पेयर अप हो जाएंगे. कुछ एग्जांपल्स बताऊं. SFL strong field ligands, strong field ligand examples if you look at it: ammonia, ethylene diamine, okay, pyridine, carbon monoxide, cyanide, NO2 minus, correct, and PPH thrice, C2H4. ये सारे के सारे जो है ना, ये सारे strong field ligands है. In short, if you look at it, either it should be nitrogen, carbon, or phosphorus donors. है ना? Clear? So, if the connection is from nitrogen, carbon, or phosphorus, they are always strong field ligands. Okay? Okay. If the connection is from, if we say something is weak field ligand, which means it is from, these are weak field ligands. Weak field ligands, which means in presence of weak field ligands, no pairing takes place. No pairing takes place in central metal atom. Yeah. Yes, sir. Right. You see the examples here of WFL. Right. So that will be H2O and F minus, H2O, F minus, Cl minus, Br minus, correct, so like that, and O2 minus, and OX, oxalate 2 minus, and so on. These are all the cases where we will see these are all weak field ligands. Okay. इसमें ध्यान से देखिए तो these are either oxygen or halogen donors, है ना? Even sulfur donors also. Okay, sulfur and oxygen donors and halide donors, these are all going to be weak field ligands. Okay. बस ये हो गया अभी थ्योरी. करेक्ट. हाँ सर. राइट. अभी हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल, मतलब क्वेश्चन के साथ. ओके. I'll do an example, and this is a typical algorithm you follow so that you can solve the questions, you know, easily. See, suppose if I gave you compound like K3FeCN6, right, and I'm trying to compare that with K3FeCl6. ये दोनों compounds है बेटा, ये दोनों complexes. The first thing you do is figure out what is the primary valency and what is the secondary valency in both the cases. Okay. Now tell me what is the primary valency in the first case? Sir, 3 ना. 3. Secondary valency 6. Correct? यहाँ पर भी 3 और 6 बराबर. 3 and Correct. Next, write the configuration. Typically यही approach रखना बेटा. ये +3 configuration है ना? +3 configuration मतलब argon we have 4s0 and 3d5, isn't it? So जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स दिखाना भी आप. like 1 2 3 4 5, so 1 2 3 4 5 इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स है. करेक्ट. 3d5. Here also it is the same thing. करेक्ट. यहाँ पर भी सेम है. अभी तक तो सेम ही चल रहा है सब कुछ बराबर. हाँ सर. Now here in the presence of strong field ligand, right, because cyanide is a strong field, no? Yes. Okay. Cyanide is strong field. So in the presence of strong field ligand, ये सारे electrons pair up हो जाएंगे. So now the new configuration will be like this. So Fe+3 will be, right, argon मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं directly 3d लिख रहा हूँ. Okay. So it is 3d5, 4s0 and 4p0. Okay. So 3d5 कैसे दिखेगा अभी? You will have 1 2 3 4 5. So 5 unpaired electrons this way, and 4s is 0 and 4p is empty. Correct? अब देखना ये 5 unpaired electrons सारे के सारे pair up हो जाएंगे ना.
because it is a strong field ligand, right? So when they get paired up, it will be 1, 2, 3, 4, 5, right? And you can see, then you'll be able to see that यहाँ पर एक orbital रहेगा ऐसे, yeah. So you can see that there are 2 empty orbitals either. Can you see? This is an empty orbital, empty orbital, empty orbital, empty, empty, and empty. Correct? Yes, sir. And typically, I can make, if I need 6 ligands to accommodate, I should get an octahedral structure, either this octahedral or this octahedral, isn't it? Yes, sir. So can you see now D2sp3 is available, no? Inner D is available. ये 3D वाला है ना, 3D वाला है, और 4 is empty है, 4p empty है, correct? So I will combine all of them together to get a hybridized orbital, which is D2sp3. You know? Yes, sir. So अब ऐसा D2sp3 hybridized orbital बनेगा, so I'll get an octahedral structure like this. So I'll get an octahedral structure like this: 1, 2, 3, 4, 1, 2, like this. Okay. This is वो D2sp3 कैसे आइडेंटिफाई किया? देखो मैंने यहाँ पर लिखा था आपको कि जब आप n-1d यूज करते हो तो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग लिखेंगे D2sp3 and why D2? See, I have 6 ligands to accommodate, right beta? So I need 6 boxes, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correct? See, 4d is also empty. 4d is also empty, correct? Yes. 4d भी empty है. I could use 4d also. यहाँ कर मैं ले सकता हूँ ये दोनों लेकर sp3d2 ऐसे भी ले सकता हूँ. बट मैंने 3d क्यों लिया? क्योंकि 3d अवेलेबल है इसलिए, है ना? और उसका लोअर एनर्जी है. आप हमेशा पहले लोअर एनर्जी पे जाओ. 3d is at lower energy and it is available, so we will choose that first. Okay. सर तो 4D का ऐसा 2 भी ले सकते हैं, मतलब 2, 3 ऐसे कैसे डिवाइड, मतलब कैसे पता चलेगा कौन सा कितना लेना है? If you have, देखो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. अगर आपको सिर्फ 2 लिगेंड्स या 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाने, आप कौन सा हाइब्रिडाइजेशन करोगे? सर sp ना. sp ना. Why are you not doing pp? Why are you not doing ss? Sir, because sp is the lowest energy. है ना? Same logic here also, beta. First we'll try to figure out the lowest orbitals, right? Okay. So for 2, अभी सारे सुन लेना. If you have to get 2, then the minimum hybridization you expect is sp. If you have to accommodate 3, then you'll go for sp2. If you have to 4 के 2 ऑप्शन है क्या? या either sp3 और dsp2, है ना? Either sp3 or dsp2. 5 has 2 options, either dsp3 or sp3d. Yes, sir. Similarly, 6 also has 2 options. What is that? Either sp3d2 or d2sp3. Understood? सर sp3d2 और d2sp3 में डिफरेंस क्या है? मतलब सिर्फ ऑर्डर ही तो अलग है. क्या ध्यान नहीं दे रहे हो बेटा. इधर लिखा है, उस टाइम पे 3-4 बार बताया मैंने वही चीज. देखो इधर मैंने क्या बताया. When you use n-1d होता है ना बेटा, लोअर d ऑर्बिटल लेते तो d2 करके लिखेंगे हम लोग. ओके, d2 से स्टार्ट होगा. अगर आउटर यूज करते हैं हम लोग sp3 d2 करके लिखेंगे. समझा? सो लेटर पार्ट में लिख रहे हैं, मतलब आप आउटर वाला यूज कर रहे हो. ओके. जब d2 लिखते हो मतलब आप इनर वाला यूज कर रहे हो. ओके. यस. अब देखो, तो यहाँ पर मैं इनर वाला यूज कर रहा हूँ ना, और मेरे पास दोनों ऑप्शंस थे. इनर भी यूज कर सकता हूँ, आउटर भी यूज कर सकता हूँ. बट विच इज मोर feasible or which is to be more chosen? Inner one, because that has lower energy. Yes, sir. Got it. ये बेटा पक्का ना? हाँ सर. राइट. अब देखो ये हो गया यहाँ तक हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन के बाद नेक्स्ट क्या क्या कॉन्सेप्ट इसमें लर्न करने हैं? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. नाउ अभी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1. अच्छा, इनिशियली नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 5.
अब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स तो पता है, म्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 होता है ना म्यू का वैल्यू, स्पिन मूवमेंट, so that is equal to 1 into 1 plus 2, तो कितना हो गया ये, √3 बोर मैग्नेटॉन्स। बेटा so if mu is greater than 0, अच्छा जब म्यू ग्रेटर देन 0 होता है मटेरियल को क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक, है ना। इफ म्यू इज इक्वल टू 0 होगा तो क्या कहेंगे उसको, डायामैग्नेटिक। सर पर इक्वल टू 0 कैसे हो सकता है, अगर मतलब अनपेड एक इलेक्ट्रॉन n 0 है, रहेगा अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है तो एक हाँ 0 हो गया ना, तो तभी तो उसको हाँ डायामैग्नेटिक कहेंगे, यस ठीक है। सो म्यू इज ग्रेटर देन 0 होगा तो पैरामैग्नेटिक, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो हो जाएगा डायामैग्नेटिक, ठीक है बेटा। नाउ लुक एट दिस, पहले नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने थे बेटा, 5, अभी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1, मतलब the spin of the electrons have decreased, no? Correct. So when, let me write down that as a note, okay, when number of unpaired electrons decreases, then spin of molecule decreases, spin of molecule decreases, and we call complex as, we call complex as low spin complex. Is that clear now, beta? Yeah, sir. So K3FeCN6 is a low spin complex. Okay, because earlier it has more number of unpaired electrons. Now it has only one unpaired electron. Here, next. What about the type of Yes, sir. what about the type of complex here? I can say it is inner octahedron complex, no? Inner Yeah. octahedron कॉम्प्लेक्स। इतना इंफॉर्मेशन है ना हर कॉम्प्लेक्स के बारे में आ जाना चाहिए। ये है एल्गोरिथम, समझा। पहले हमने प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, कॉन्फ़िगरेशन, ये तीनों लिखा, अनपेड इलेक्ट्रॉन का इंफॉर्मेशन लिखा, फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो उसके अकॉर्डिंगली पेयर अप कर दिया, ठीक है। फिर एम्प्टी ऑर्बिटल्स को ऑब्जर्व किया, उसके बेसिस पे हाइब्रिडाइजेशन किया, उसके बाद डिसाइड किया कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, फिर बताया कि ये लो स्पिन है या हाई स्पिन है, या फाइनली ये इनर है या आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है बेटा। यस सर। इतना सब कुछ करना पड़ेगा हर एक कंपाउंड के लिए। इसके लिए आते हैं। ओके सर। नाउ इज इट अ स्ट्रॉन्ग और अ वीक फील्ड लिगैंड? क्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगैंड, हैलाइड है ना, हैलाइड सारे वीक फील्ड होते हैं। Since it is a weak field ligand now, beta, what is the new configuration now? This is the new configuration. How does that look like? So in the new configuration, we would have this as 3D5, 4S0, and 4P0, and 4D0. ये सारे हैं. Because it is an weak field ligand, it has no strength to pair the electrons. It cannot push the electrons to get them paired. Understood? So Yes, it will sir. remain the same. So 4F is empty, 4D is 4P is empty, and 4D is also empty. I have to accommodate 6 chlorines. I require 6 empty orbitals to hybridize. So which one do I use, beta? Now I do not have any other alternative but to go for outer octahedron. No? Sir. So now what will be the state? It is going to be sp3 d2 hybridization. Clear, beta? Now tell me how many number of unpaired electrons? 5. Initially, how many number of unpaired electrons? 5 only. Okay. Unpaired electrons change nahi hua na? And what about mu? Mu is equal to n into n plus 2 Bohr magnetons, which is equal to under root of 35 Bohr magnetons. Yeah? Yes, sir. And it is paramagnetic or diamagnetic? Paramagnetic. Paramagnetic. So, paramagnetic. Yeah? Yes, sir.
So now same note, if 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 number of unpaired electrons remains same after forming complex, then that is going to be a high spin complex. We call that as high spin complex. Okay, beta? Yes. This is called as high spin complex. Okay. And what about the type of complex here? No, inner or outer octahedral? It is an outer octahedral complex. outer octahedral complex. Okay, बेटा चलो इसको एक बार नोट कर लो बेटा, because this algorithm is what you need to solve all the problems. Okay, Sir, both of them, no? both of them.
फिनिश बेटा. Sir, 1 second. Yes, sir, done. Hmm. 1 second. हेलो. हाँ हेलो अजीत. हाँ ठीक है, मैं लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा तुमको. ओके 3:45. मैं बोला ना 3:45 का आएगा मैं नीचे. हाँ 3:45 को आ जाओ. ठीक है ठीक, चले. डन बेटा. Yes, sir. Right. Now listen up. If we take the other case like K3, FE, K4, sorry, K4, FE, CN6 is the third case, and I'm trying to compare that with K3, FE, H2O 6. Now, can you try both of them? Write the primary valency, secondary valency, write the hybridization here, and do the rest of the things. ठीक है बेटा, स्टार्ट करो. सर आपका वॉइस. हेलो सर. हाँ बेटा. सर आपका वॉइस बहुत लैग हो रहा है और स्क्रीन नहीं दिख रहा है. पावर गया था. Can you see now? नो सर. मुझे दिख रहा है अभी. हाँ आप भी दिख रहे हैं. Try these two ones.
सर फर्स्ट वाला हो गया। हाँ बेटा, हुआ हाँ सर, फर्स्ट वाला हो गया। क्या आया? हाइब्रिडाइजेशन इज सर क्या आया? D2sp3। हाँ। इलेक्ट्रॉन जीरो आया। यस सर। डायमैग्नेटिक है। यस। And it should also tell you the fact that this is going to be our inner octahedral. यस सर, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। Inner octahedral, and this should be low spin complex. Low spin complex. Let's try the next one then. यस सर। Sir, H2O is tridentate or bidentate? Monodentate, beta. H2 is monodentate. Monodentate. It is weak. Weak field ligand. Okay. Okay. So it goes quite similar to that of the above case. Clear? I just want you to practice once. Yeah. Okay, sir. हाँ. सर वो ऊपर वाले में हम लोग को डी में से 2 ही यूज करने हैं। हाँ बेटा, because we need to accommodate 6 only, na? See, 1, 2, 3, 4, 5, 6, isn't it? हाँ ओके सर, 6 वो इसलिए ना क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। हाँ, secondary valence is 6 है इसलिए। डन सर। हाँ बेटा, finished. So let me write down what are the cases here. It should have been sp3d2, isn't it? Yes. The number of unpaired electrons are 5, Yeah. and it should be paramagnetic. Yeah. It is outer octahedral complex. Yes. Outer octahedral complex, and it is a high spin complex, isn't it? Yes, sir. So this is typical way of solving it. Yeah. Yes, sir.